So hello everyone and welcome to day 4 of our 30 day of code with HackerRank. And day 4 का जो question है that is related to class versus instance. ठीक है, so we'll be talking about object oriented programming in general. ठीक है, since the question is based upon classes and instances, we'll be talking about object oriented programming and we won't be doing it in C, we won't be doing it in Java, we'll be doing it in Python. जावा में मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज द सिंटैक्स कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग इफ यू आर हियरिंग अबाउट क्लासेस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इसीलिए विल कीप थिंग्स सिंपल एंड विल टेक इट इन पाइथन फर्स्ट. इफ यू वांट टू रिपीट द सेम थिंग्स इन जावा यू कैन सिंपली गूगल और यूट्यूब पे यू कैन फाइंड अ ट्यूटोरियल. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सेशन, अगर पाइथन में चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर जावा में पक्का समझ में आ जाएंगे बिकॉज पाइथन इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन. ठीक है, so let us first discuss what are classes, what are instances, how do we perform some operations over them. उसके बाद we'll come back to our question and try to solve it out. ठीक है, so when we talk about object oriented programming, उसमें होता ये है कि we create certain objects, basically जिसको हम बोलते हैं कि this is a class and these objects have got certain attributes. Attributes are basically the properties. ठीक है, एंड दीज क्लासेस या दीज ऑब्जेक्ट्स हैव गॉट सम मेथड्स. मेथड्स मतलब फंक्शन. ठीक है, तो हर क्लास का या हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाती हैं. एंड एवरी ऑब्जेक्ट या एवरी क्लास हैज गॉट सम मेथड्स. मेथड्स यानी फंक्शन. उन फंक्शंस के हिसाब से द ऑब्जेक्ट विल बी वर्किंग. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इफ वी consider that God is the best programmer, अगर ऐसा कर मान के चले, so what would be God running on his software? ठीक है, what would be God writing about in the program? तो जो भी God है, the supreme programmer, what will he be doing? He would have created a class called as human. ठीक है, let us imagine that God is a programmer. He would have created a class called as human. अब उसके अंदर human class में God would have put some properties. ठीक है, God would have created a class called as human. उसके अंदर he would have put some properties and he would have defined some methods for us. ठीक है, so just to name some few properties to you, every human being that God has created has got a height, they have got a weight, they have got a gender, they have got a birth date. ठीक है, they have also got an age. ठीक है, सो इफ वी अज्यूम दैट गॉड इज अ प्रोग्रामर एंड इफ ही वांट्स टू क्रिएट ह्यूमंस, तो वो क्या करेंगे, ही विल क्रिएट अ बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ अ ह्यूमन फर्स्ट. ठीक है, उस ब्लूप्रिंट के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हाइट, वेट, जेंडर, बर्थ डेट, एज एंड सो ऑन. एंड देन गॉड वुड हैव डिफाइंड सम मेथड्स दैट दिस ऑब्जेक्ट ह्यूमन कैन परफॉर्म. फॉर एग्जांपल यू कैन लर्न न्यू थिंग्स. ठीक है, यू कैन टॉक, you can walk. ठीक है, you can eat, you can process information. ठीक है, so उसके बाद क्या होगा, this is just a basic blueprint. एक human नाम का क्लास बना दिया, that is just a basic blueprint जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ मेथड्स हैं. अब अगर मुझे स्पेसिफिक ह्यूमंस बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली कॉल दिस क्लास. For example, if I want to create myself, if I want to create Abhijit, I will call this basic blueprint. उसमें मैं हाइट की एक वैल्यू इनपुट दे दूंगा, वेट की एक वैल्यू दे दूंगा, जेंडर की एक वैल्यू दे दूंगा, बर्थ डेट एक दे दूंगा, एज एक दे दूंगा. So I'll customize these properties which are predefined inside of the class to create a typical particular object. If I want to create some other human, so what will I do? If I want to create some other human, human 2, उसके लिए भी आई विल यूज द सेम ब्लूप्रिंट बट मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर दूंगा. लेट अस से माय हाइट इज 150 सेंटीमीटर, आई वांट टू क्रिएट अनदर ह्यूमन, तो उसमें मैं ये जो पैरामीटर्स, ये जो प्रॉपर्टीज दूंगा उसको मैं चेंज कर दूंगा. आई कुड गिव द जेंडर एज गर्ल, आई कुड गिव द हाइट एज 160 सेंटीमीटर्स, द एज एज द फाइनल एज, द डेथ एज वुड बी 60 इयर्स एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज हाउ क्लासेस वर्क्स. आप रियल लाइफ में जो भी चीजें देख सकते हो, फील कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एन ऑब्जेक्ट. एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव सम प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज जो उसको डिफाइन करती हैं. एंड एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव सम मेथड्स. मेथड्स मतलब द फंक्शंस बाय विच दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू वर्क. So all of the humans that will be created from the same blueprint. The blueprint is not going to change. We will only customize the properties of the blueprint to create each different individual. Are you getting this? Answer in the chat. Yes, no. ये चीज समझ में आया? What are classes? या what are objects? Objects are basically, you can call them as things. We have some properties. They have some methods. Properties you can define, and जब आप उस क्लास को, उस ऑब्जेक्ट को यूज करके या उस ब्लूप्रिंट को यूज करके एक स्पेसिफिक क्रिएट करना चाहते हो कोई चीज, यू विल बी पासिंग सम प्रॉपर्टीज विद इटसेल्फ एंड वो कस्टमाइज होके एक नया ह्यूमन बना लेगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई क्रिएट अ ह्यूमन ब्लूप्रिंट, it will have these properties, it will have these methods. If I want to create Abhijit out of this blueprint, I will pass these values, I'll pass these different values, and फिर वो क्या करेगा, using this blueprint, ठीक है, using this blueprint I will be creating an object, an instance. तो जो हम create कर रहे हैं, this will be called as an instance, ठीक है, and this blueprint that we have, this is an object. तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है. उस ब्लूप्रिंट को यूज करके अगर आप बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट, लाइक इफ यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट, यू विल बी कॉलिंग देम एज इंस्टेंसेस. क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? आंसर इन द चैट, यस, नो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑब्जेक्ट्स इज द बेसिक ब्लूप्रिंट. इट विल हैव सम प्रॉपर्टीज, इट विल हैव सम मेथड्स. उसको यूज करके if I am creating one particular entity, that particular entity will be called as an instance. Just to give you one more example of class, every game has a game object. ठीक है, every game has a game object. अब ये class है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर there will be some properties and there will be some methods. Properties क्या, methods क्या? Let us talk about it. Let us say that you are creating the T-Rex game. Everybody has played this, the T-Rex game by Chrome. जब इंटरनेट चला जाता है तो you are able to play this game. So what is happening? This game has 3 different types of objects. ठीक है, the first object over there is your dinosaur. ठीक है, the T-Rex. The second object is a cactus. ठीक है, and the third object is a bird. If you played the game. ठीक है, अब डायनासोर की जो है, it would have some of its own attributes, it will have some of its own methods. Cactus will have its own attributes, cactus will have its own methods. Bird will have its own attributes, bird will have its own methods. ठीक है, so now what is happening, when you play the game, when you start the game, one dinosaur will be created using this blueprint. उस डायनासोर के पास ये एट्रीब्यूट्स होंगे, उस डायनासोर के पास ये मेथड्स होंगे. दीज मेथड्स यू कैन से जंप मेथड एक है, जब आप स्पेस बार प्रेस करते हो तो डायनासोर जंप्स. ठीक है, देयर वुड बी अ रन मेथड विच वुड बी शिफ्टिंग इट्स पोजीशन. ठीक है, अब ये कैक्टस जो है इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. देयर आर डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट हाइट्स ऑफ कैक्टसेस प्रेजेंट. So what will happen, you will use this blueprint to create cactus 1, to create cactus 2, to create cactus 3 and so on randomly on the screen. Sorry, getting this? Game development या ऐसी सारी चीजों में classes are used very extensively. आप एक object बना दो, आप एक class बना दो, उसके कुछ properties दे दो, कुछ attributes दे दो and कुछ methods, कुछ functions जो वो object execute कर सकता है. And then what will happen? You can create instances of that object that you created. Are you getting this? Please answer in the chat. Yes, no. ये चीज समझ में आ रही है सबको? Can you please answer in the chat? Yes, no. Okay. So let us do one thing. Let us try to think more about it, and let us try to think about the structure. कि exactly हो क्या रहा है. So what happens is, this is your class that you are creating. ठीक है, this will be the class that you will be creating, and यहाँ पे सबसे पहले you will have a constructor. क्या होता है constructor? Let us see ahead.
कंस्ट्रक्टर ये होता है, what will the constructor do? This constructor will initialize, ठीक है, the constructor will initialize an instance, and then you will have certain methods. So for example, you will have method 1, you will have method 2, ऐसे करते करते you can have a lot of methods. So what will happen, let us say this you have created the class. सबसे पहले you will write the constructor. Constructor में क्या होगा, constructor में there will be the attributes, ठीक है, there will be attributes present, and then you will write the different methods, the different functions that this object can perform. So what exactly will happen, to use this blueprint, to use this object, या to create an instance of this object, what will you do, you can simply call, ठीक है, you can simply call this object by passing the various parameters, ठीक है, अगर आपने parameters pass किए, you are calling this object by passing some parameters, these parameters will go over here and a particular instance of it will be generated, and then once you create an instance, once you give it a name, you can use that name to access the functions, ठीक है. तो अब ये हो क्या रहा है, what exactly are we doing, let us try to write the code. So for writing the code we'll be using Python. I'll quickly go to IDLE and I'll open a new file. This is a new file, ठीक है, just a second, let me minimize also, ठीक है. In this file we'll be writing all our Python code and उसको execute करेंगे shell में. So here let me first save this. All the Python files are saved as .py, ठीक है. Okay. Simran is asking what is the difference between instance and an object. देखो Simran, object is the blueprint. When you are using the blueprint to create different items, those items are called as instances, ठीक है. For example, let us say the blueprint to create a car, मतलब there will be an engine, there will be 4 tires, there will be a steering wheel, एक roof होगा, seats होंगी, ये सारी चीजें is the blueprint of the car, ठीक है. But when you customize it, कि engine XYZ टाइप का engine होना चाहिए, कार के अंदर के टायर्स ये वाली कंपनी के होने चाहिए, पेंट कलर जो है कार का रेड होना चाहिए. So when you are customizing it, then you are creating one instance of that blueprint. आप उस blueprint को use करके एक particular instance create कर रहे. Are you getting the difference, Simran? Is that clear? Object is general. Every object will have some properties. It will have some methods. Methods मतलब functions. What you will do is, whenever you want to create an item of that type object, तो आप क्या करोगे, आप उसको initialize कर दोगे. इसीलिए कहेंगे कि one instance you have created, ठीक है. We will see what exactly is happening, ठीक है. So let me just write down one class. Class को लिखते कैसे हैं? So let me go back to the drawing tool. Class exactly लिखते कैसे हैं? The keyword is class, CLASS. Then you write name of the class, ठीक है. Then you open and close the round brackets and then you give the colon mark. उसके बाद here what you will write is, देखो class बन गया. Let us think logically. You have created a class, but now the first thing that you will have to create is a constructor. Constructor क्या करेगा, आपने जो values पास की हैं उनसे एक object को initialize करेगा. So therefore initialize करने के लिए we use a constructor called as init. So how do we write that? We first write def, then we write double underscore init, उसके बाद फिर से double underscore, and then in the brackets we write self, and then we write all the parameters, parameter 1, parameter 2, parameter 3 and so on, ठीक है. उसके बाद there is a colon, and after which here we will initialize all these parameters. How do we declare the methods? Methods declare करना भी simple है. Write def and then you will write a method 1, and you will write self, there is a colon, and उसके बाद
you will write all the things that you want to do inside of this method. So what will happen if let us say you are creating an instance, तो आप अगर इस क्लास का एक इंस्टेंस बना रहे हो, इस ब्लूप्रिंट को यूज करके एक इंस्टेंस बना रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आप उसको एक नाम दोगे, लेट अस से दिस इंस्टेंस इज कॉल्ड एज I1। उसके अंदर आप 3 पैरामीटर्स पास करोगे, क्यों, क्योंकि यू वांट इट टू बी ऑफ दिस क्लास, और इस क्लास में कितने पैरामीटर्स चाहिए, 3। हाउ डू आई नो दे आर 3 पैरामीटर्स, बिकॉज इन पैरामीटर्स को यूज करके द क्लास इंस्टेंस इज गोइंग टू गेट इनिशियलाइज्ड, INIT। So what will happen? You will pass 3 parameters, parameter 1, parameter 2 and parameter 3. So in parameters, these parameters will go to init. Init is the first thing that will get executed inside of the class, and init क्या करेगा, इन parameters को इस current instance के लिए initialize कर देगा। For example, let us say you create, ठीक है, let us say that you create a class for dogs, ठीक है, so what will I write, I will write class and I will write dogs, then open and close these brackets and a colon। उसके बाद I need to initialize a dog, तो dog के क्या क्या properties हो सकते हैं, I will write DEF double underscore INIT, INIT will initialize, it is a constructor, वो construct करेगा एक instance को। The compulsory thing is to write is self, and then a dog can have a name, a dog can have a breed, let us इतना ही लिखते हैं, एक name होगा एक breed होगा, then a colon। Afterwards what we'll do, we have to initialize it, so we write self dot name is equal to name, self dot breed is equal to breed। now ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, we'll talk about it later, but अभी we are just initializing it। so what will happen is when you are creating a dog, ठीक है, let us say you are creating a dog called as my dog, and you want to use this object, you want to use this data type, you want to use this blueprint, so what you will say, my dog is equal to dogs। so what you are exactly doing is my dog will have all the properties that is defined in this blueprint। ये चीज समझ में आ रहा है, my dog is equal to dogs का मतलब क्या है, it will simply tell that my dog, the new instance that I have created called as my dog, will have all the properties of this class dog। Are you getting this? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Answer in the chat, yes, no? Yes. Yes. Then you will pass some parameters for your dog। तो वो कैसे पता चलेगा कौन से पैरामीटर्स आपको आपके डॉग के लिए चाहिए, तो आप ये देखोगे कि डॉग्स जो क्लास है वो कौन से पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट्स अ नेम, इट एक्सेप्ट्स अ ब्रीड, सो यू विल पास द नेम, लेट अस से टॉम, and you will pass the breed, let us say Labrador। so what will happen, this name that you have created for your dog and this breed that you want for your dog will get initialized for this instance, for your dog, my dog के लिए, for this current dog, this current instance, name and breed will be initialized। तो उससे होगा क्या, we are just saying कि for this current instance, for this current object, which object that I have created, my dog, तो my dog के लिए self dot name is equal to name। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने नेम पास किया है, ये जो मैंने नेम पास किया है, ये जो मैंने नेम पास किया है टॉम, उसको सेल्फ डॉट नेम में स्टोर करो। सेल्फ डॉट नेम मतलब क्या, फॉर द करंट इंस्टेंस इफ यू वांट टू यूज द नेम वैल्यू यू टेक इट फ्रॉम द पास्ट नेम वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस? यू आर इनिशियलाइजिंग इट। तो आगे किसी भी मेथड में अगर आपको डॉग का नेम यूज करना होगा, यू विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ मतलब खुद का। यू आर क्रिएटिंग अ डॉग कॉल्ड एज माई डॉग, जो किससे बना है, यूजिंग ऑल द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस क्लास कॉल्ड एज डॉग्स। आपने उसमें दो वेरिएबल्स पास किए, फर्स्ट इज नेम विच इज टॉम एंड द ब्रीड विच इज लैब्राडोर। सो व्हाट विल हैपन व्हेन इट गोज ओवर हियर, यू विल से इस खुद के जो इंस्टेंस अभी मैंने क्रिएट किया है उसमें अगर मुझे नेम कहीं भी यूज करना होगा,
so I'll use the past name. And अगर इस पूरे instance में if I want to use the breed, I will use the past breed. Are you getting this? Can you answer in the chat? Yes, no? ये चीज समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? Answer in the chat please. Yes, no? Okay, let us see an example so that you will be able to understand what exactly is happening. ठीक है, so let us say I create a class over here. I create a class called as human. तो मैं क्या लिखूंगा? I'll write class human and then round brackets open and closed and then I'll write a colon mark. उसके बाद I'll go inside. जैसे ही मैंने क्लास क्रिएट किया I need to have a constructor. कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? उन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर देगा. ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज फॉर यू गाइस. एक सेकेंड, let me increase the font size so that you guys are able to see it clearly. Yeah, I think this much size will be visible to you. ठीक है, तो मैंने क्या किया? I created a class called as human. अब मैं क्या कर रहा हूं? उसके अंदर इनिशियलाइज करूंगा. So I'll say I am initializing. So I have written two underscores. This is the first underscore. This is the second underscore. फिर I'll write init. फिर से first underscore, second underscore. उसके बाद I'll give the parameters. The first is self. उसके बाद if I'm creating a human, that human will have a name. ठीक है, let us say I am just creating a human with a name. So then what will happen? I'll simply say if you are creating an instance of this human, if you are creating a human, so for that current instance, if you want to use name, you take the value which is passed inside. Are you getting this? Answer in the chat. Yes, no? ये चीज समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? I am simply saying that if you want to use the name value for that current instance, self.name, you will use the name which is passed by the user. Why do we use self? See, self ये बताता है for this particular instance. ठीक है, अगर आपने एक नया इंस्टेंस बनाया है तो सेल्फ ये बताएगा that these code is valid for that particular instance only. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभिजीत को क्रिएट करो बट आप उसके अंदर किसी और के प्रॉपर्टीज डाल दो. दैट इज व्हाई वी यूज सेल्फ. व्हाट इज सेल्फ सेइंग हियर कि फॉर दिस करंट इंस्टेंस, if you are creating a current instance, you will use only this value. So let me give you an example. Let us say I want to create Abhijit. So I'll say Abhijit is equal to human. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? Create someone called as Abhijit जो human object हो. So what will happen? Abhijit will have all the properties that is there inside of the human. बट हियर व्हाट इज देयर? जो मेरा ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, जो मैंने ह्यूमन ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए एक नेम की जरूरत है. दैट इज व्हाई इफ आई रन दिस, एक एरर आएगा एंड द एरर इज इनिशियलाइज करते समय वी आर मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट कॉल्ड एज नेम. बिकॉज इनिशियलाइज करने के टाइम पे आई हैड टू गिव अ नेम व्हिच आई फॉरगॉट टू गिव. सो व्हाट विल आई से? अभिजीत is a human that I want to create, but I want to give it a name, so it is a string, so therefore I will say name is equal to Abhijit. अगर मैं ऐसे लिखता हूं, now if I run this, there won't be any errors. कुछ हो क्यों नहीं रहा है? Because हमने बस initialize किया है उसको. So how do I know that it has been initialized? Let us say I want to print the type of it. So I'll say type of Abhijit. ठीक है, what am I doing? I am printing the type of Abhijit. So let me save this and run this. You can see that Abhijit is of the type human. क्यों? Because Abhijit को मैंने initialize किया है of the type human. Human is a class and मैंने उसके अंदर name pass किया है Abhijit. So what will happen? This name Abhijit will go over here and a class, ठीक है, an instance of this human class will be initialized. इनिट यूज करके इट विल बी इनिशियलाइज, जिसका नाम क्या होगा? नाम होगा अभिजीत. सो फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, ऑल द नेम दैट यू आर यूजिंग इन दैट इंस्टेंस विल बी द नेम दैट यू हैव पास्ड, दैट इज अभिजीत. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज आंसर इन द चैट, यस, नो.
so that we can move ahead. इधर तक समझ में आया सबको क्या चल रहा है? Come on, quickly answer in the chat. Yes. Okay. Yes. Yeah. Okay. So let us move ahead. Let us talk about some other concepts in detail. ठीक है. मान लो, let us say that as I told, I am creating a class called as dog. ठीक है. So मैं क्या करूँगा? I'll create a class called as dog. ठीक है. And उसके बाद what I do? Round bracket open and close, and then a colon. उसके बाद I'll initialize this dog. तो मैं क्या करूँगा? DEF डबल अंडरस्कोर INIT, फिर से डबल अंडरस्कोर, उसके बाद what will I write? I'll pass a self and some parameters. So let us say this is a dog that has a particular breed, that has a particular name, and we are checking if this has a spot or not. ठीक है. So what we'll do, we have to initialize it. So we'll say self dot name. पहले breed आ रहा है, so self dot breed is equal to breed. Order does not matter. Then we'll say self dot name is equal to name, and then we'll say self dot spots is equal to spots. So what exactly are we doing? Whenever any instance of this class dog will be created, it will be initialized using these three parameters: breed of the dog, name of the dog, and whether it has spots or not. So what will happen? Inside this class, for one particular instance, अगर आपको breed को access करना है, so I'll say you can access it using self.breed. ठीक है. इसका use क्या है? Let us see. So now what I'm doing is I'm calling it, I'm initializing, I'm creating an instance. तो मैं बोलूंगा I want to create a dog, so I'll say my dog is equal to, and this should be of the class dog, but उसके अंदर I need three parameters: a breed, a name, and spots है कि नहीं. So I'll say its breed, let us say you are keeping it as a Labrador, so I'll say lab, comma, its name, let us say I want to keep it as Tom, and the spots, whether it is there or not, just if I want to check if the spots are there or not, I'll say spots is equal to false. मतलब spots नहीं है. Now if I run this, let me save this and run this, no errors as such. यहाँ पे और कोई errors नहीं आए. Now what I'm doing is, if I want to see what are the values of breed of my dog, of name of my dog, and of spots of my dog, so I can simply say, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, self dot breed. So for this current instance, the breed value will be taken, the value which was input by the user. For this current instance, the name will be taken which is input by the user. For the current instance, the spots will be taken by the entry given by the user. So what will happen if I print, ठीक है, if I print my dog का breed, so I'll say my dog dot breed. So what will happen? Let us see. You can see that the output is lab. So what exactly is happening over here? यहाँ पे हो क्या रहा है? I have created an instance of this class dog. So therefore I have written my dog is equal to dog. I passed these parameters. मैंने जो current dog my dog बनाया है, it is of the class dog and it has these parameters. The breed is Labrador, the name is Tom, and the spots are false. Then what I'm doing is I'm just printing my dog का breed. So what will happen? ये breed की value, name की value, spots की value ये ऊपर गए, इन्होंने initialize किया, and Python ने क्या बोला कि for this current instance, कौन सा instance? My dog instance. तो अगर आप लिखोगे my dog dot breed, you will get the value of breed, that is lab. If you write my dog dot name, you will get the name passed by you, that is Tom. If you write my dog dot spots, you will get the spots value that you've passed. So if I say my dog dot spots over here, if I save this and if I print this, I'll get the value false because that was passed by me. Are you getting this? क्या ये चीज समझ में आ रहा है? Please answer in the chat. Yes, no. Are you getting this part? ठीक है, okay. So this is, अब तक तो सारी चीजें simple हैं. Now what happens is,
there are some values which we don't have to initialize for every other dog. मतलब क्या है, let us say I want to create another dog, so I can say if this is my dog, I can create another dog, I'll call it your dog. तो मैं इसको क्या बोलूंगा, your dog is also taking all its blueprint from the dog class, but उसके अंदर values I am changing. I am, let us say जो breed है, that is some other breed. I don't know a lot of dog breeds, so let me say XYZ breed के हैं, and let us say the name of the other dog I am passing it to be something Hacky. I don't know if it is a good name, and this dog has a spots, so I'll say spots is equal to true. So अब क्या होगा, there are two dog instances that are getting created. The first instance is my dog, the second instance is your dog. So for this my dog, the breed is Labrador, the name is Tom, and the spots are false. For this instance, your dog, the breed is XYZ, the name is Hacky, and the spots are true. So what will happen, whenever we are creating an instance called as my dog, जब भी हमने ये instance बनाया my dog, what will happen, we are creating this instance of this class dog. तो क्या होगा, breed की value, name की value and spots की value यहाँ पे ऊपर पास होंगे, they'll get initialized. And for this instance, मतलब my dog क्या, जो अगर मैं breed की बात करूंगा तो breed will be there, my dog का name की बात करूंगा तो name value will be taken, my dog का spots का बात करूंगा तो spots will be taken. So let us say that I am printing, your dog का name. So what will be printed here, your dog का name is Hacky, therefore your dog का name, because it was initialized as name is equal to Hacky, when I print your dog का name, the output should be Hacky, and therefore you can see the output is Hacky over here. So what I am trying to say is, मैंने क्या किया, मैंने बस dog का एक blueprint बना दिया कि कोई भी dog दुनिया में होगा, उसका एक breed होगा, उसका एक name होगा, उसका एक spot होगा, and then I can create different types of dogs using the same blueprint by just changing its properties. I can just change its properties. Are you getting this? This is the exact working of the class. आप class क्यों बनाते हो? क्योंकि then if you want to create different objects, you can create them by using the same blueprint, but by using different properties. Are you getting this? Please answer in the chat, yes, no. Any doubts still here? ठीक है, so let us move ahead. देखो, now what is happening is, see we are creating this self dot breed. ये जो वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर दिस करंट इंस्टेंस. मतलब क्या है, अगर मैं माई डॉग की बात करूं तो माई डॉग की ब्रीड हो जाएगी द ब्रीड की पास्ट वैल्यू विच इज लैब. अगर मैं योर डॉग की बात करूं तो सेल्फ डॉट ब्रीड मतलब योर डॉग डॉट ब्रीड, उसकी वैल्यू हो जाएगी XYZ. बट वॉट इफ देयर इज सम वैल्यू विच इज कॉमन फॉर एवरी डॉग क्रिएटेड. मुझे उसको इनिशियलाइज नहीं करना है, इट इज कॉमन फॉर एवरी डॉग. फॉर एग्जाम्पल, एवरी डॉग इज अ मैमल, MAMMAL, every dog is a mammal. So I don't need to initialize every dog as a mammal, क्योंकि every dog is by default a mammal. So in that case what you can do is, if there is some variable जिसको आपको initialize नहीं करना है, it is true for every dog, आपको customize नहीं करना है, then what you can do, init के पहले you can write that variable. Just for example, let us say I am saying that species of each dog is going to be of the type mammal. So now what I can do is, भले मैंने my dog and your dog को customized value दी है, but species of my dog and your dog both will be mammal, क्योंकि मैं इस species को initialize नहीं कर रहा हूँ. It is present and it will be true for every class. These types of variables are called as class objects attributes. ये जो property है ये सारे डॉग्स के लिए वैलिड होगी, क्योंकि मैं इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं इसको इनिशियलाइज करने के पहले डिक्लेयर कर रहा हूं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ आई से प्रिंट माय डॉग डॉट स्पीशीज एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट योर डॉग डॉट स्पीशीज, then what will happen, both my dog and your dog will have the common species called as mammal. Why is that happening?
क्योंकि भले आपने माई डॉग को इनिशियलाइज किया है कुछ अलग प्रॉपर्टीज देके एंड योर डॉग को इनिशियलाइज किया है कुछ अलग प्रॉपर्टीज देके, बट दिस प्रॉपर्टी स्पीशीज एट्रीब्यूट इज रिटन आउटसाइड ऑफ इनिट, मतलब इट इज कॉमन फॉर एवरी डॉग दैट यू कैन क्रिएट. सो इफ आई ट्राई टू रन दिस, माई डॉग का भी मैमल प्रॉपर्टी है, स्पीशीज है, एंड योर डॉग का भी मैमल आउटपुट आ रहा है. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो. यहाँ तक समझ में आया सभी को व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस? यस. ओके ओके, लेट अस मूव अहेड. ठीक है, सो इफ दीज थिंग्स आर क्लियर, लेट अस, अब देखो वी हैव टॉक्ड अबाउट द एट्रीब्यूट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेथड्स. आपने क्लास बनाया, बस उसके एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, देयर मस्ट बी सम मेथड्स. सो हाउ डू वी डू दैट? मेथड्स को आप कंसिडर करो एज फंक्शन. सो हाउ टू डू दैट? यू कैन सिंपली से DEF, then you'll write the method name. Let us say for every dog, a dog can bark, so I'm creating a method called as bark. And यहाँ पे remember that you can pass a parameter called as self. ये बहुत important है. You will always have to pass this parameter self. What is this saying is, this method bark will be valid for this current instance that you have created. Are you getting this? Self का यहाँ पे मैंने क्यों use किया है? सेल्फ बेसिकली ये बताएगा कि जो करंट आप बार्क मेथड या बार्क फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हो इनसाइड ऑफ दिस क्लास, उसमें आप करंट इंस्टेंस को पास कर रहे हो, वरना आपने जो ये इंस्टेंस इनिशियलाइज किया है उसको आप यूज नहीं कर पाओगे. इस फंक्शन बार्क को आपका ये इंस्टेंस यूज नहीं कर पाएगा. सो फॉर योर इंस्टेंस टू यूज दिस फंक्शन बार्क, यू विल हैव टू पास सेल्फ इनसाइड ऑफ इट एंड देन a colon, and let us say bark. If I am calling, what will happen? The dog will bark. So what will happen? The dog will simply say poof. So now let us see how this is working. Let us say I am creating a dog called as my dog again. उसके अंदर my dog को जो मैं create कर रहा हूँ, that is of the type या that is of the class dog. उसके अंदर the parameters that would pass is breed, name and spots. So I'll say breed is equal to Labrador. ठीक है, उसके बाद the name that I am going to type is Husky and the spots are false, मतलब spots नहीं है उसे. Then what I'll do, what is this doing? आप एक क्या कर रहे हो? आप एक my dog नाम का इंस्टेंस बना रहे हो which is taking all its properties from this class dog. तो जैसे ही आपने एक इंस्टेंस बनाया, एक my dog नाम का इंस्टेंस जनरेट हुआ जिसकी स्पीशीज है मैमल, जिसका ब्रीड है द करंट ब्रीड दैट यू पास, जिसका नेम है द करंट नेम दैट यू पास, जिसका स्पॉट्स है द करंट स्पॉट्स वैल्यू दैट यू पास. ऑल्सो दिस माई डॉग कैन नाउ एक्सेस दिस फंक्शन बिकॉज आपने फंक्शन के अंदर डाला है सेल्फ. सेल्फ का मतलब क्या है? दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड बाय द करंट instance. So what I can say, if I want my dog to bark, I will say my dog dot bark, ठीक है, and then open and close these brackets. So if I execute this, what will happen? Sorry, printf नहीं, Python में we use print. I'm so sorry for that. So if I save and run this, I will get the answer as woo. So what exactly is happening over here is, मैंने एक my dog instance बनाया जिसके अंदर मैंने ये सारे values पास की. And now what I'm saying is my dog to bark. So what will happen? My dog, which is an instance of this dog class, it will go and check if there is a bark function present. Bark function में गए, what is bark function doing? It is simply printing woo. So it will print woo. Are you getting this? How are things exactly working? ये चीज समझ में आया सबको? Answer in the chat, yes, no? Okay. Now one more thing. Since these are functions, these can take external values also. So for example, if I take one more value over here, n, एक चीज नोट करना, ये जो n है, it is not initialized over here. ठीक है, it is not initialized over here. This, therefore, I won't be passing n value here,
n वैल्यू में कब पास करूंगा, जब भी मैं इस bark फंक्शन को कॉल कर रहा हूं. So if I say bark 3, so what is happening? This bark function is taking a value 3, storing inside of n. So let us say if I write something like this: for I in range 0 से लेके n तक, you do one thing, you print woof. ठीक है. So this is how a for loop is written inside of Python. मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि फॉर आई इन रेंज 0 से n, मतलब 0 1 2 करते करते n-1 टाइम्स you do what? You print woof. So since and woof के बाद let us say I am writing \n. So what exactly is going to happen? If I am saying my dog dot bark and I am passing the value 3, then n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3. And what will happen? My dog will execute this function जिसके अंदर n की वैल्यू गई 3. So this I loop will run for 3 times, 0, 1 and 2. ठीक है. I is equal to 0, I is equal to 1, I is equal to 2. And तीनों time what is happening? We are printing woof. So when I run this, since I passed 3 over here and I am using that same value 3 inside of a for loop, woof will be printed thrice. So let me quickly run this, save करके. You can see woof, then there is another woof and then there is another woof. मान लो अगर मैं 3 times नहीं, I am passing this value as 10. ठीक है, I am passing the value 10. So what will happen? This 10 will go to and get stored inside of n. And then for I in range 0 से 10, ठीक है, मतलब 0 से लेके 10-1, 0 से लेके 9 times, 0 से लेके 9 मतलब 10 times this loop will run. And what will happen? Woof will be printed 10 times. So if I save and if I run this, you can see that woof got printed 10 times over here. So अब तक क्या देखा है? You can create a class, you can initialize it with properties. If there is a function for which you don't want an initialized property, initialized attribute, आपको ये जो value है वो आप user से accept कर सकते हो for this particular function. What if I wanted to use the initialized value? अगर मुझे यहाँ पे woof print नहीं करना था, मुझे अगर यहाँ पे dog का name print करना था. So what would I have done? Let us say this is my function. Let me write another function. ठीक है. So let me delete this. Let me create another function. And I am creating this function called as print your name. ठीक है. Print your name. I am creating a function जिसके अंदर I am passing the parameter self. So now for this print your name, what do I have to do? I have to print the name. किसका name? Of the dog. But which name am I passing? The current initialized name. And what is the current initialized name? It is self.name. So therefore I will not write name over here. अगर मैं सिर्फ यहाँ पे name लिखता हूँ तो काम नहीं करेगा. Why? Because if I have to print the name of the dog for this particular instance, I will have to say self.name. तो self.name का मतलब क्या है? You print the name that has been initialized for this particular instance. ठीक है. So let me save this. Let me run this. No errors as of now. Now what I'm going to do is I'm going to call this print your name function. So मैं क्या बोलूँगा? My dog dot print your name. ठीक है. And let me save this. Let me run this. So what will happen? The name of the dog will get printed, which is Husky. यहाँ तक कोई doubts? Any doubts still here? Answer in the chat. Yes, no. No? Okay. So I hope these are the basic concepts that we wanted to see for a class. Let us go back to our question now. अगर ये concepts clear हैं, then the question will be easy to solve. So the objective is to learn about the difference between a class and an instance. So basically a class is an object, a blueprint, and instance is basically the different items that you are creating using the blueprint that you have already created. That is the basic difference. For example, dogs was our class, या dogs was our object. My dog, your dog, his dog, her dog, आप 4-5 टाइप के dogs बना दो. Those will be different instances of the object dog. For example, human is an object and all the people inside of this meet, Simran, Janvi, Sonali, Roshni, Abhijit, all of us are various instances of the blueprint of human. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no.
ठीक है, यहां तक समझ में आया सब चीज? ओके, लेट अस गो ऑन टू सॉल्व अवर क्वेश्चन फर्स्ट. लेट अस रीड व्हाट हैज टू बी डन. वी हैव टू राइट अ पर्सन क्लास with an instance variable age. ठीक है, I need to write a person class. So I'll say class person, then open close round bracket and then colon. उसके अंदर see what do I have to do. Let me minimize this थोड़ा सा so that we have it over here. ये मैंने person class बनाया, ठीक है, just a second. इसके अंदर what do I have to do? I have to write an instance variable age, ठीक है, and a constructor that takes an integer initial age as a parameter. So I need to write a person class with an instance variable age and a constructor that takes an integer initial age. So what exactly is happening? We are creating this variable age at that instance, and this constructor will take the value initial age as a parameter. तो देखो कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, INIT, init. So this constructor is taking initial age. So let us first write that. So what is happening? सबसे पहले तो I have to write DEF, उसके बाद underscore INIT and then again underscore and then in the parameters I have to first pass self and then I have to pass initial age. ठीक है, why am I passing initial age over here? क्योंकि उसने क्या बोला, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो एक इंटीजर लेता है initial age as a parameter. So this is my constructor init because it is going to initialize, it is going to construct that instance and that instance will have an initial age. So let me write it down over here. Now what will happen? We have to create an instance variable age. I want to create an instance variable age. So what will I say? Instance variable मतलब self dot age. This is an instance variable age. कैसे पता चला इंस्टेंस वेरिएबल है? बिकॉज इट इज देयर फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, देयरफॉर आई एम राइटिंग सेल्फ डॉट एज. नाउ लेट अस गो बैक एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. द कंस्ट्रक्टर मस्ट असाइन इनिशियल एज टू एज आफ्टर कंफर्मिंग दैट द आर्गुमेंट पास्ड एज इनिशियल एज इज नॉट नेगेटिव. अगर जो इनिशियल एज की वैल्यू आपने पास की है वो नॉट नेगेटिव है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन यू सेट दिस इनिशियल एज वैल्यू टू एज. ठीक है, if a negative is passed then constructor should set the age to 0 and print age is not valid setting age to 0. So what exactly is happening? ये self age self dot age अभी नहीं चाहिए. We will first have to check if this initial age is negative or not. So I will say if initial age is what? If it is not negative, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? इफ दिस इनिशियल एज इज नॉट नेगेटिव देन व्हाट यू डू, यू इनिशियलाइज दिस एज टू इनिशियल एज. ठीक है, द कंस्ट्रक्टर मस्ट असाइन इनिशियल एज टू एज after confirming that the argument passed as initial age is not negative. So if it is not negative, if it is greater than equal to 0, if the initial age passed is greater than equal to 0, then self dot age, this current instance age, you set it to the initial age. अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो else if that is not happening, मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव में what do I have to do? I have to set the age value as 0, self SELF, I'm sorry, self dot age value I have to set it to 0 and I have to print a message that is given over here. I have to print age is not valid setting age to 0. So let me simply copy paste it. Age is not valid setting age to 0. So यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया? We have created a constructor जो एक वैल्यू लेगा इनिशियल एज. अगर इनिशियल एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब नॉट नेगेटिव, तो वो क्या करेगा? उसने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया सेल्फ डॉट एज जिसको वो पास्ड इनिशियल एज असाइन कर देगा. लेकिन अगर नेगेटिव हुआ इनिशियल एज देन वो सेल्फ डॉट एज को 0 कर देगा एंड वो प्रिंट करेगा एज इज नॉट वैलिड सेटिंग एज टू 0. यहां तक समझ में आया क्या? आंसर इन द चैट प्लीज, yes, no. How we are using the constructor, did you understand this part? Any doubts still here? Okay, so now let us move ahead. उसके बाद क्या लिखा है? In addition you must write the following instance methods. हमें ये methods बनाने. The first method is year passes.
ईयर पासेस मेथड क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द एज बाय 1. सो लेट अस राइट दैट. फर्स्ट आई हैव टू राइट ईयर पासेस, सो DEF ईयर पासेस. उसके अंदर एवरी टाइम विल हैव टू राइट सेल्फ. ठीक है, अब ये करने क्या वाला है, इट विल सिंपली टेक दिस एज वैल्यू, सेल्फ डॉट एज वैल्यू, एंड उसको इंक्रीज बाय 1 करेगा. सो यू कैन नॉट राइट सेल्फ डॉट एज प्लस प्लस, ऐसा नहीं लिख सकते. वाई? बिकॉज प्लस प्लस इज नॉट एन ऑपरेटर इन पाइथन. यू कैन सिंपली से प्लस इक्वल टू 1. So what is happening? This method year passes, ठीक है, for this current instance, अगर इसको मैंने कॉल किया, then what will it do? It will simply take this age, self dot age, this current instance age, and increment it by 1. क्या ये चीज समझ में आया? Answer in the chat. Yes, no? Did you understand this part? Yes? Okay. Let us move ahead. Next, there is another method that we want to create. Am I old? It should do these things. अगर age less than 13 है तो print करो you are young. अगर age greater than equal to 13 है but less than 18 है, print you are a teenager. And then otherwise you are old. So am I old is what? Is another method. So I'll say define another method, am I old. ऐसे लिखना है, define am I old. एंड इट विल टेक दिस वैल्यू एज. एज के ऊपर वो चेक करने वाला है, इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा यहाँ पे सेल्फ एंड देन अ कोलन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एज के ऊपर वो परफॉर्म कर रहा है. सो आई से इफ आई जस्ट कैन नॉट यूज एज, आई हैव टू यूज सेल्फ डॉट एज. सो आई से सेल्फ डॉट एज इफ दिस इज लेस देन 13. यहाँ पे क्या लिखा है, इफ दिस एज इज लेस देन 13 यू हैव टू प्रिंट यू आर यंग. सो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस. इफ this is less than 13, then I have to print you are young. अच्छा, वरना क्या करना है, so else if के जगह in Python we use elif. So I'll say elif, I'll have to write the second condition. Second condition क्या है, age greater than equal to 13 and less than 18. उसके लिए मुझे क्या प्रिंट करना है, you are a teenager. So let us say, let me copy this and I'll say if self dot age is less than 18 and at the same time self dot age is greater than equal to 13, then what do I have to do? I have to print this particular value that you are a teenager. And then finally what do I have to do? Else case में I have to print what? I have to print you are old. So I'll simply copy this and I will paste this. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो. ये चीज समझ में आया सबको? यस, ओके. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इनपुट फॉर्मेट क्या है, इनपुट इज हैंडल्ड फॉर यू बाय द सब कोड इन द एडिटर. इनपुट विल बी हैंडल्ड बाय द एडिटर. टी इज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, वो सब चीजें छोड़ देते हैं, नो इश्यूज. सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस राइट डाउन, हमें बस इतना ही कोड लिखना था. सो इफ यू गो बैक टू योर एडिटर you can see, if you choose the language to be Python, ठीक है. So what exactly is happening, there is a class called as person. उसके अंदर उन्होंने initial age define करके रखी है. We have to construct it basically, and then am I old is a function and year passes is also a function. So what I'll do, I'll simply copy paste the code that we had written over here. This is what we had to initialize. So I'll simply copy this and I'll simply paste this. Then there is something called as am I old. तो am I old के अंदर क्या लिखना है, this. So I'll again copy this and I'll paste this over here. उसके बाद क्या है, year passes. Year passes में what we have written, we just have to increment self age by 1. So what will we do, we will simply go over here and self age plus equal to 1. So अगर मान लो मुझे एडिटर में नहीं रन करना है, मुझे अगर यहीं पे रन करना है, so what will I have to do, I will have to create a new person. So let us say I am creating a person called as P1. उसका it is taking all of its inputs like a class person. So I'll say person. And देखो initialize करने के लिए I need an initial age. So let us say firstly मान लो कि age negative है,
so if I'm passing the value -9, ठीक है, so what will happen if I initialize this value as -9, मुझे एक मैसेज आना चाहिए age is not valid, setting age to 0. Let us see if that is working. So let me run this. If I run this, देखो क्या आया, age is not valid, setting age to 0. Why this is happening? Because I have initialized the initial age as -9. It will go check over here कि अगर initial age जो है वो negative है, then you set the self dot age to 0 and you print this. So अगर मैं -9 करके अगर मैं ये बोलता p1 dot age, अगर मैं print करने जाता, so how would I do it? I will simply write print p1 dot age. So what is happening? I have initialized p1 जिसका age है -9, ठीक है. So what will get printed? Age is not valid, setting age to 0. But at the same time I also know कि अगर ये इधर जा रहा है, else में जा रहा है, so self dot age is also 0. So if I am printing self dot age, p1 dot age, that should be 0. So let us see if that is working. If you run this, age is not valid, setting age to 0 and self dot age की value यहाँ पे print हुई है 0. So let us say now that it is a positive value. Let us say the age is 12. ठीक है, let us say the age is 12. Now what will happen? Age 12 initialize होगा. Initialize मतलब initial age की value है 12. अगर age initial age greater than equal to 0 है, मतलब this condition is true, then self dot age will be assigned the value of initial age जो अपन ने पास की थी. So now if I print p1 dot age, self dot age, and since initial age is greater than equal to 0, self dot age की now value that will get out is 12. So let me save this and run this and see. देखो, now the value of self age that we are getting is 12. यहां तक चीजें समझ में आई? आंसर इन द चैट, yes, no. Okay, now what I'm doing is initial age मैंने 12 रखा था. Let us say that I am using a for loop. तो मैं बोलूंगा for I in range, ठीक है, for I in range 0 से लेके 10. 0 से लेके 10 मतलब this loop will run for 10 times. And what I am doing is I am doing p1 का जो age है, ठीक है, p1 का जो age है उसको मुझे increase करना है. तो what will I do? I'll say year passes. So what will I say? p1 के लिए I am calling the function year passes. So see what is happening. I am initializing p1 of initial age 12. तो उसका current age is 12. But उसके बाद what I am doing is for 10 consecutive years I am calling this function year passes. मतलब 10 साल बीत गए. After 10 साल बीत गए, if now I try to print the value of p1 का age, p1 dot age. So what will be the value of p1 dot age? The value of p1 dot age will be 12 plus 10, which is 22. So now if I run this, let me save this and run this. देखो क्या आया? सबसे पहले 12, which was the initial age that I was printing. उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने 10 times इस फंक्शन को कॉल किया year passes. तो जितने बार मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा था, किसके लिए? p1 के लिए. तो self dot age was increasing by 1, मतलब p1 की age was increasing by 1. तो initial अगर 12 था and I am calling this, incrementing this for 10 times, the final value of age will be 12 plus 10, that is 22. And therefore when I printed p1 dot age, I got the value 22. तो अब देखो, अगर उसकी age यहाँ पे 12 है and if I am checking am I old, ठीक है, so what I am saying, if I am checking p1 dot am I old, ठीक है, and the same thing I am checking afterwards. अगर मैं सेम चीज नीचे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो सी व्हाट आई एम डूइंग, p1 नाम का एक मैंने पर्सन क्रिएट किया जिसकी इनिशियल एज थी 12. मैंने उसकी इनिशियल एज चेक की तो आंसर आएगा 12. देन मैं चेक करूंगा एम आई ओल्ड, तो एम आई ओल्ड फंक्शन विल गेट ट्रिगर्ड. व्हाट इज हैपनिंग? एज इज 12, एज इज लेस देन 13. सो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? यू आर यंग. उसके बाद 10 साल बीत गए, 10 years passed. So now the age becomes 12 plus 10, 22. Then I am printing the current age 22. उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ am I old, तो it will go up over here. अगर वो greater than 18 है then it will print you are old. ठीक है. So now what will happen? Let us run this code and let us see what is happening. सबसे पहले 12 था तो you are young. फिर मैंने year passes को 10 बार बुलाया तो फाइनली 12 से ये एज हो गई 22. फिर मैंने am I old को फिर से कॉल किया and since now the age is 22,
The output that I am getting from am I old is you are old. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no. ठीक है. Now if I want to structure this a little, I will simply say, ऐसे लिखते हैं, your current age is, and then I will take p1 dot age. ठीक है. तो इससे क्या होगा, सबसे पहले जब मैंने इनिशियलाइज किया 12 इयर्स के, तो इट विल प्रिंट योर करंट एज इज 12, एंड देयरफॉर व्हेन आई प्रिंट दिस, यहाँ पे प्रिंट आएगा यू आर यंग. देन व्हाट विल हैपन, लेट अस से if before calling p1 dot year passes, I am saying, I am printing okay, I let me write it like this. I'll say I plus 1 years have passed. ठीक है. And then what I'll do is, let me just copy this and let me paste it over. तो मैं क्या कर रहा हूं, I am saying जब मैंने इनिशियलाइज किया तब एज 12 थी, then I am printing your current age is 12. उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, for 10 years every time this loop is running I will say 1 years have passed, 2 years have passed, 3 years have passed, ऐसे करके 10 years have passed, क्योंकि ये p1 dot year passes कितने बार रन हो रहा है, for 10 years. Then what will happen, your current age is 22, and then it will check if you are old. So if I just save this and run this, hopefully there are no errors. Okay, what is happening, your current age is plus p1 dot age. You can only concatenate string, not integer to string. So what I can do, if it cannot add integers, I'll simply convert it to string. ठीक है, no issues. Let me run this again. अभी क्या हो रहा है, नेम स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड. str होता है क्या, हाँ str, आई एम सो सॉरी, str होता है, नॉट स्ट्रिंग, str. So what is happening, I am just converting the integer value to string. Let me save this, let me run this. अभी क्या हो रहा है, I plus here again, I plus 1 is an integer, so I'll have to say str of I plus 1 plus years have passed. So let me run this again. Okay, now एक काम करते हैं, let me run this again for you. Let me save this, let me run this. अभी देखो क्या हो रहा है, your current age is 12, you are young, 1 years have passed, 2 years have passed, ऐसे करके 10 years have passed. Then पहले अगर age 12 था, your current age is now 22 and you are old. Are you getting this? What we have created? We have created a class person. It will initialize the value of age by checking the initial age. अगर initial age greater than equal to 0 है, तो उसकी current age will be the initial age that we have passed. ठीक है, या that I did. ठीक है, फिर क्या लिखा है मैंने, else उसकी age 0 आप डिक्लेयर कर दो, क्योंकि अगर age initial age नेगेटिव पास किया तो then will say age is not valid and therefore setting age to 0. Then I have defined two methods, year passes which will increment the year by 1, am I old method which will check the current age and print whether you are young, whether you are a teenager or whether you are old. Then I have created a instance p1, उसको वैल्यू दिया 12, मान लो इधर 12 नहीं, मैं 85 देता, तो 85 में if I did and let me run this again, so what will happen, your current age is 85, you are old, because greater than 18 को old print करना था. Then 10 years will pass and then your age will be 95, again you are still old. Did you get this? Answer in the chat please, yes, no. Code समझ में आया सभी को? Yes. So the code that we have written is exactly the same. Let us run this code and see if the test cases are passing. Hopefully they will. Yes, all the sample test cases are passed. Let me submit the code. 3 test cases हैं. I'll just wait for the test cases to pass. Hopefully हो जाएगा. Yes, all the 3 test cases have passed. ठीक है. So let me first stop recording.